नमस्कार, वेध न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करतो। हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध डॉक्टरांना मी आपली भेट घालून देतोय आणि या डॉक्टरांपासून रुग्ण कसे बरे होतील ही समाजसेवाच वेध न्यूजच्या माध्यमातून आपण करतोय। डॉक्टर एस कुमार अशीच एक व्यक्ती आपल्याला देशभरातून सापडलेली आहे आणि डॉक्टर एस कुमार यांच्या माध्यमातून अप्रोप्रिएट डाएट थेरपी या थेरपीच्या माध्यमातून डायबिटीज पासून मुक्ती मिळवणारे अनेक रुग्ण बरे होत आहे। अप्रोप्रिएट डाएट थेरपी नक्की काय आहे याविषयी समज गैरसमज आपण गेल्या अनेक भागातून बघितले, मात्र आज डॉक्टर एस कुमार यांना अमरावती येथील संत गाडगेबाबा युनिव्हर्सिटीमध्ये नॅशनल सायन्स डे च्या निमित्ताने त्यांचं व्याख्यान आयोजित केलं होतं। नॅशनल सायन्स डे चं महत्त्व हे प्रत्येक दर्शकाला आहेच, मात्र डॉक्टर एस कुमार यांनी डायबिटीज पासून मुक्ती कशी मिळवावी हे या युनिव्हर्सिटीमध्ये सांगितलंय। आपण ते जाणून घेऊया। तत्पूर्वी त्यांचा यथोचित सन्मान देखील युनिव्हर्सिटीच्या वतीने करण्यात आला। त्याचबरोबर सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या व्याख्यानाला प्रारंभ झाला। बघूयात डॉक्टर एस कुमार यांचं हे व्याख्यान। So these tests are given into medical books. Let me tell you very frankly, that tests are given in the medical books, but not a single doctor, not in India, nor in the world, who's doing this test. When once upon a time my father had graduated in 1949 at King Edward College, Marathi, in 1949. After that, he did a MSc in mathematics. He was a gold medalist. And then from Indian Institute of Science, Bangalore, he did a further education, and right from the day one he was a class 1 officer. We born, brought up in that culture. Of course, education is fundamental thing. And now I have been in this field almost for 45 years. And today as I am going to give the best gift of your life to your parents of a science day, that it's already spoken that I have written my book is no diabetes then no diabetes. The spelling keeps on changing. KNO, no diabetes, then NO, no diabetes. This was a really challenge for me, but yes, science remains the science. My earlier career was in pharmaceutical line. So there I found some of the lacuna in pharmaceutical line. When typhoid can be cured, malaria can be cured, even TB within a 6 months you can cure. But when it comes to the diabetes, it's very difficult. Years together you are taking the medicines, years together. If you find in your own family or some of the people who must be suffering here with the diabetes must be for years together. Before I go further, I would like to know from each of you how many people are your family or the parents are diabetic in this hall. कोई डायबिटीज है किसी को? किसी के घर में डायबिटीज है? मदर को, पेरेंट्स को? हाथ ऊपर के लिए, खाना खा के आए कि नहीं है? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ऑल ओवर इंडिया. घर में every third person in any family, third person, fourth person is diabetes, suffering from years together. First on oral hypoglycemic tablets, later on the insulin. The stigma of diabetes was over the time, and still when he depart from his family, from this world, उसके साथ में एक स्टिग्मा रहता है, डायबिटीज हो गया था, गया आदमी. But the thing really is like that. Here, although a lot of people possibly from here may not agree with me, but what I found in my throughout the career, the science and medical science, there are two different things. Science has got the solution for everything on this earth for the welfare of the human being, and it doesn't cost much. But medical science is a manipulated science of a science for the interest of industry.
When it comes to industry, you need the raw material, and the raw material is a human being. And the people are saying it's a metabolic disorders. Yes, it's a metabolic disorder. Medical science is good when it comes to surgery and infection. But when it comes to the metabolic disorder, then there is no solution for the medical industry, like diabetes, cardiac problem, blood pressure, knee replacement, kidney. They are not basically disease, but years together we have been spending money like anything. If you go the past of pharma industry, the turnover from 10 crore to now it is. There was, if you see in earlier in Amravati, there will be very few medical shops. If you just calculate one medical shop, now it has increased to in number of 10, in the ratio of 10. Doctors, but when it comes to diabetes, yes, diabetes says ki it is keep on increasing. WHO reports that by 2025, India is going to be diabetic capital of the world. According to the science, says if you follow certain guidelines, follow diet therapy, in another 25 years, diabetes will vanish from the educational book, just like a polio. So what are that? Now I will ask you, those who are already here, the patient, I would like to ask you, how many tests are known to you when it comes to analysis or quantify the diabetes? Anyone? Sir? आपसे पूछना चाहूँगा सर, सर कौन से टेस्ट होते हैं आप कराते हैं आप? और तीन टेस्ट. What's the good name, sir? For me must be new. डॉक्टर मानिक. और सर कितने साल से आपको डायबिटीज है? 6 साल से. इनसे सीनियर कोई है क्या जिनको इससे 6 साल से ऊपर हो? खैर मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम. तो जैसे डॉक्टर मानिक जी ने कहा, 2 मिनट को कह दीजिएगा सर. इसके अलावा किसी और टेस्ट को जानते हैं आप? डू यू नो एनी अदर टेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस? Yeah, that is for the cardiac and other problems, right? So, जैसे as Dr. Manik said, he knows only 3 tests. Similar position is the throughout the world, not only in India, throughout the world. And when you go to the medical laboratory or when you go to any doctor, they say fasting, post-meal and HbA1c. In some of the cases, Dr. Manik, I found that even people are not doing HbA1c. Only 2 tests are they doing. But when we go to the doctor, when infection disease is there, after having a certain test, still we would like to go into the test which controls and says ki yes, it is a temperature of a typhoid, malaria or TB. Second test has to be done. So there are the 3 more tests. I am sure, Dr. Manik, I am saying you are non-diabetic. I am giving challenge in this hall, you are non-diabetic. But since you are going with a symptomatic treatment, and what is being said that your body is, if I ask you why you are saying, you will say that probably insulin is not enough in my body, is not being produced. First. Second will come answer from you that pancreas is not working. So there is a test. Have you done that test? No, because nobody is doing in India. So when you do any test like fasting, sugar, the similar test come. Fasting, serum insulin, how much insulin is there in the blood? First. Second, the one more test comes C-peptide. This C-peptide comes only when endogenous insulin is found in your system. This will never come with the exogenous insulin. Second test is C-peptide. Third is HOMA-IR, homeostasis for model assessment. Here it comes how many beta cells are there in your pancreas and their sensitivity. So these tests are given into medical books. Let me tell you very frankly, that tests are given in the medical books, but not a single doctor, not in India, nor in the world, who is doing this test. I have got 50 clinics in India, across the India, everywhere I go to the clinic, and I am finding, I have yet to find a person who is a diabetic in my chamber. Because this test which I have asked them to do are there in normal range.
इन सिंपल रेन आई एम सेइंग इफ़ यू गॉट द, आपके घर में कुआं है, कुएं में पानी है, तो क्या आप बाहर से पानी मंगवाएंगे? नहीं, कभी नहीं मंगवाएंगे आप। तो जब आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल अच्छे हैं, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, तो फिर आप बाहर से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स और इंसुलिन क्यों ले? दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज स्टक टू माई माइंड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग माई लेक्चर्स in various years, I have given more than 450 lectures as on today in various medical colleges and institutions. But last में उन्होंने यही कहा कि sir, we are not interested in doing. If you want to, then I have started my separate chain of my clinics from Nagpur, known as Appropriate Diet Therapy Center. And आज के डेट में करीब 50 से ज़्यादा सेंटर्स मेरे भारत में, जहाँ पे मैंने एज आई सेड आई येट टू फाइंड ए पर्सन विद इज डायबिटीज इन माई चैम्बर, बट हर दिन मेरे यहाँ 50 से 60 पेशेंट्स होते हैं। इन यूट्यूब आई यू जस्ट यू फाइंड आउट डॉक्टर एस.क साइंटिस्ट, यू विल फाइंड मोर देन 200 टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद माई इंटरव्यूज ऑन दैट। तो कहने का मतलब है कि साइंस हैज़ गॉट हिज ओन वे ऑफ वर्किंग। तो सिंस बीइंग अ साइंस डे, दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन to know that diabetes do not exist in your family, in your friend circle, nor anywhere in India. So आपके ऊपर जो लोगों को आपको तकलीफ है, जिन लोगों को आप ठीक करना चाहते हैं, इसके बाद मुझे बताइए। आई विल टेल यू द टेस्ट, वो टेस्ट आप करके हमारे किसी भी सर्विस में जा सकते हैं। तो आपका सवाल है कि शुगर कम नहीं होती। See, very simple thing, diabetes is not a disease. सिंपल वे करिएगा। तो उसके लिए मैं समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। नेचर जब ऊपर से बरसात गिरती है तो उसको आप रोक सकते हैं क्या? मेरा सवाल थोड़ा सा जवाब दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ऊपर से पानी नीचे आ गया और जहाँ इकट्ठा हो गया, उसको निकालने की ताकत हम लोगों में है, ह्यूमन बीइंग में। अगर इकट्ठा हो गया तो उसका जो एग्जिट पॉइंट है उसको हम थोड़ी सी लकड़ी से निकाल देंगे तो पानी बह जाएगा। तो ऊपर का जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कैन स्टॉप इट। सिमिलरली इन द ह्यूमन बॉडी यू कैन नॉट स्टॉप मेकिंग अ शुगर, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी हमको लगती है। तो शुगर बनना नहीं, लेकिन शुगर जो अनयूज्ड है सेलुलर इन ब्लड सर्कुलेशन, इसको निकालना हमारे हाथ में, बिकॉज द एंट्री पॉइंट इज नोन एज द इंसुलिन रिसेप्टर्स। और इसको जनरली बहुत दूसरे जैसे कोरिलेट किया जाता है कि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन रिसेप्टर और ब्लॉक, इफ यू जस्ट ओपन इट, शुगर कम्स डाउन इनसाइड। सो अनयूज्ड शुगर इज नोन एज अ डायबिटीज। अब उसका कारण क्या है? तो मेजर कारण है एडिबल ऑयल्स, क्योंकि जब हम कोई तेल गरम करते हैं तो उसमें धुआं आता है, ए फ्यूम। फॉर ऑर्डिनरी मैन इट्स अ फ्यूम, लेडीज़ के लिए फ्यूम है, बट व्हेन यू सी द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज़ गॉट द ट्रांस फैटी एसिड्स, it has got the acrylamine, it has got the acrylamide, it has got advanced glycation end product. This is known as a Maillard reaction in 1918 में इसका Maillard reaction का केमिस्ट्री में बोला जाता है। So this has got a one thin layer of fat on the cellular wall. तो जो हमारे एंट्री पॉइंट है जिसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं, दे आर ब्लॉक्ड, तो शुगर इज नॉट गेटिंग एंट्री इनटू द सिस्टम। जैसे ही हम ऑयल चेंज करते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर करते हैं, शुगर कम्स डाउन इमीडिएटली। क्वेश्चन ऐसा था कि आपके संस्था का कोई ऐसा दवा वगैरह है? देखिए, उसके लिए वी आर वर्किंग, वी नीड अ सेंसिटाइजर। मेडिसिन हैज गॉट नो वैल्यू इन दिस। मेडिसिन विल वर्क ऑन अ पैंक्रेटिक सेल टू मेक मोर इंसुलिन। वी नीड समथिंग, यानी आपको सिर में दर्द है और आप पैर की गोली खा रहे हो। दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मेडिकल फील्ड। प्रॉब्लम जहाँ है उसको आप सॉल्व करो, तो यू जस्ट द डायटीज कंसेप्ट एंड सम ट्रेस एलिमेंट्स। देयर इंसुलिन सेंसिटाइजर नोन एज अल्फा लिनोलिक एसिड, इनोसिटॉल, क्रोमियम, दे आर द सम सेंसिटाइजर आप देते हैं, तो जैसे ही आपका गेट ओपन हुआ, शुगर गोज इनसाइड। और अब आप अगर फाइंडिंग देखेंगे तो शुगर आपकी कम मिलती है हर 15 दिन में।
आई एम सेइंग डायबिटीज डू नॉट एग्जिस्ट। डायबिटीज़ उन्होंने बना दिया है क्योंकि आपकी हाई शुगर और इसको कर रहे हैं, तो आप शुगर को जब खाना नहीं खाएंगे तो नेचुरली शुगर विल कम डाउन। मेरा कहने का कि आपको डायबिटीज़ है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्यों आप लोग इतने परेशान हो रहे हो? वाई योर इंडस्ट्री इज गिवनिंग? डू द बेस्ट कॉल, पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। सेकेंड, अभी इसमें करना क्या है, 5-6 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आई विल टेल यू द फैक्ट्स एंड फिगर। इन जुवेनाइल डायबिटीज़ ऑलवेज इट इज़ हैपनिंग कि छोटे बच्चों को डायबिटीज़ क्यों होती है? सो ऑलवेज दे इट्स बेसिकली जेनेटिक, बट डियर फ्रेंड्स जेनेटिक ओनली 20%। वो भी आई हैव नॉट येट फाउंड इन माई चैम्बर जितने लोग हैं उनके बच्चों के टेस्ट नहीं होते हैं। मे बी सम ऑफ द अदर रीजन शुगर इज़ इंक्रीज एंड दे लेबल्ड एज ए डायबिटिक्स पर्सन, तो वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे पेशेंट्स ठीक होते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ में। और उसका मेन कॉज द काउ मिल्क, ध्यान रखिए व्हाट आई एम टेलिंग यू, द काउ मिल्क। छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है और वी से इज ऑटो इम्यून डिजीज, बट काउ मिल्क हैज़ गॉट वन IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, जस्ट हैज़ गॉट आइडेंटिकल empirical formula like insulin, similar formula. So when you ingest cow milk, that internal beta cell is not able to identify which is real and which is from outside. So in that case they kill their own beta cell and bachchu becomes autoimmune disease. This I quoted in my first book, which is titled as Yes Milk Ab No Milk. This is forwarded by Mrs. Maneka Gandhi ji in 2006, and I got the pleasure of having my book in President Library in 2011. So I am working with the science. Science is says cow milk is for their bachchus, and our human milk is species specific. So this is one of the नेचर ने दिया हुआ एक ऐसा कंसेप्ट है जो मिथ में हम लोग चल रहे हैं कि हमेशा हमेशा हम लोग दूध के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध क्या होता है। माई वन वीडियो इज देयर बिकॉज टाइम इज़ नॉट परमिटिंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट यू कैन गो विथ माई द मिथ्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल डाइट, 10 साल पहले डाला था। उसके अंदर मिल्क और ऑयल के ऊपर बहुत इलाबोरेटिव मेरा एक लेक्चर है, उसको आप ज़रूर सुनिए। दैट विल चेंज योर चेंज ऑफ योर थाट प्रोसेस। सेकेंड, इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिबल ऑयल्स, क्योंकि ये डाइट थेरेपी का कंसेप्ट है। अभी यहाँ मैं अगर सबसे पूछूं कि आप कौन सा तेल खाते हैं तो नेचुरली आपके यहाँ से शायद स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर लेडीज़ से पूछा जाए तो कोई बोलेगा हम सनफ्लावर खा रहे हैं, कोई बोलेगा सनफ्लावर है, कोई सोयाबीन है, कोई ग्राउंडनट ऑयल है, कोई सरसों का तेल है, कोई, बट विच ऑयल इज़ बेस्ट? तो एक नया कंसेप्ट आया कि सब मिला लो आधा आधा, या यू कीप ऑन चेंजिंग। डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। साइंस अगेन क्लासीफाइज वेरी वेल कि किसी भी तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 28%, बट मोस्ट ऑफ द ऑयल आर हैविंग मोर देन 75%. So this oil are basically the immunosuppressant, carcinogenic, ये होते हैं जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, और थायराइडोजेनिक, इसमें थायराइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। द बेस्ट ऑयल फॉर योर किचन में है दैट इज द राइस ब्राउन ऑयल, द वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन आफ्टर घी एंड वाइट बटर। थर्ड, आपको अगर नमक की जहाँ बात आती है तो यू शुड बी नॉन आयोडाइज, जो सॉल्ट है वो आपको लेना है, जिसको हम लोग हिमालयन क्रिस्टल सॉल्ट या सेंधा नमक बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन से सोल्यूशन कीजिए। अदर डे आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर प्रसाद जी, तो ही इज़ ऑल्सो इंसिस्टिंग कि जो हज़ारों साल से हम लोग जीते आ रहे, तो किसके भरोसे जीते आ रहे हैं हम लोग? भाई नेचुरल चीज़ें थी, जैसे काली मिर्च के बारे में आपने कल बात की, तो इट इज़ द पेपरडिन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन आज तो सारी चीज़ें चेंज होते जा रही है, तो उनका भी कंसेप्ट यही है कि जो पुराने हमारे जो एडिबल्स हैं उसमें से फाइंड आउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक मिथ और भी है कि घर में आपको एक गिलास दूध दिया जाता है और बोलते हैं कि 1 चम्मच आप हल्दी डाल के पियो,
तो डियर फ्रेंड्स, हल्दी जो होती है, जो टर्मरिक इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द कुरकुमिन विच इज ओनली 2 to 3% मैक्सिमम. द क्वालिटी ऑफ कुरकुमिन, क्वालिटी ऑफ जो हल्दी होती है दैट इज हैज़ वर्क ऑन द कुरकुमिन एंड हैज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी. तो अगर हम एक चम्मच भी अगर दूध में डालते हैं तो इट हैज़ गॉट नो वैल्यू बिकॉज इट्स अ येलोइंग कलरिंग एजेंट और फाइबर्स हैं. सो आपको 1 ग्राम में सिर्फ 4 कैप्सूल बनती है जो आपके 100 ग्राम में आपकी 4 कैप्सूल बनती है जो आपके काम की होती है. सो ऑलवेज एनी एंगल इन योर पर्सनल लाइफ यू शुड थिंक विद द साइंस एंड दिस इज़ द डेडिकेशन यू शुड हैव टूवर्ड्स योर फैमिली. आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं. तीसरा और एक लास्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाउ वी हैव गॉट वन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. आप उसमें 20% रेजिस्टेंस स्टार्च है, इट इज़ नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. बट ये दिस इज़ फॉर अ जनरल नॉलेज. इनको आपको आपके अगर फैमिली में डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनको ज़रूर बताइए. और यू शुड ऑलवेज कीप, यू डू एनीथिंग, यू डू एनी एजुकेशन, बट प्लीज स्टिक टू साइंस बिकॉज साइंस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू द हेल्दी लाइफ. यू विल गेट फ्रॉम मेडिसिनल प्रॉपर्टी से आपको कुछ मिल जरूर जाएगा लेकिन यू विल नॉट गेट द हेल्दी लाइफ. आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. थैंक यू. डॉक्टर एस कुमार यांच्या व्याख्यानावर प्रभावित होऊन संत गाडगे बाबा युनिव्हर्सिटीचे रजिस्ट्रार डॉक्टर तुषार देशमुख यांनी देखील डायबिटीज विषयी आपलं मन मोकळं केलं. जाणून घेऊया डॉक्टर देशमुख काय म्हणाले. ऐसा सुना तो नहीं था. डायबिटीज़ ये डिसीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर है, इतना सुना था. लेकिन जो डॉक्टर एस कुमार सर ने कहा कि जिनको ऐसा लगता है कि हमको डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ एक्चुअल में नहीं है, तो उसके बारे में अभी उन्होंने काफ़ी चर्चा भी की, काफ़ी प्रश्नोत्तर भी उन्होंने दी. लेकिन उसके बारे में और जानकारी लेनी पड़ेगी. और मुझे खुद भी डायबिटीज़ है, काफ़ी दिनों से मैं खुद उससे जूझ रहा हूँ और दवाई ले रहा हूँ. मैं चाहूँगा कि उनसे मेरी और 1-2 बार इसके ऊपर चर्चा हो और उसके बाद में मैं उनकी जो थेरेपी है या उनका जो कंसेप्ट है वो मैं समझ लूँ. बघितलं ना, डॉक्टर तुषार देशमुख जे रजिस्ट्रार आहे त्यांनी संपूर्ण माहिती अप्रोप्रिएट डाएट थेरपीची घेतलेली आहे आणि निश्चितपणे भविष्यात ते या डायबिटीज पासून मुक्ती मिळविल्याशिवाय राहणार नाही. या व्याख्यानातून निश्चितपणे आपल्याला समजलं असेल की डॉक्टर एस कुमार यांचं देशभरात नव्हे तर संपूर्ण जगात किती मोठं कार्य आहे. डायबिटीज पासून मुक्ती मिळविण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून अनेक रुग्ण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. आमचा देखील हाच प्रयत्न आहे की आपण लवकरात लवकर डॉक्टर एस कुमार यांची अपॉइंटमेंट घ्या आणि डायबिटीज पासून मुक्ती मिळवा. म्हणूनच हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला डॉक्टर एस कुमार यांची भेट ही प्रत्येक आठवड्यातून एकदा घडवून आणतोय. पुन्हा भेटूया आपण पुढील एपिसोड मध्ये हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात. धन्यवाद.